Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Mantra. इस कार्यक्रम के प्रायोजक नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस। अपना बेहतर कल सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। मानसिक शांति के साथ साथ एनपीएस जीवन में संतुष्टि भी लाता है। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉर्पोरेट कर्मचारी एनपीएस से जुड़ सकता है। किसी भी पीओपी जैसे बैंकों, एनबीएफसी के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी है। Welcome to Market Mantra, our program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Sonu Sood and with me is my co-anchor in Hindi, Vibhuti Mishra. धन्यवाद सोनू। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार की ताज़ा खबरें आपके लिए लेकर आए हैं और हम उन पर चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए आज स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ पत्रकार विशाल दहिया। धन्यवाद विभूति जी, थैंक यू जी, बहुत स्वागत। और सबसे पहले हेडलाइंस के साथ हैं मेरी सहयोगी सोनू सूद। Thank you, Vibhuti. The top stories. India remains fastest economy despite global crisis, says President in her Parliament address. Key domestic indices rise nearly 1%. Sensex closes at 71,752. Nifty settles at 21,726. And Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) conducts nationwide events under One District, One Product Sampark initiative. संसद को संबोधित करने के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि दुनिया में संकट के बावजूद भारत सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था। प्रमुख घरेलू शेयर बाजार में करीब 1% की वृद्धि। सेंसेक्स 71,752 और निफ्टी 21,726 पर बंद। और डीपीआईआईटी यानी उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग एक जिला एक उत्पाद संपर्क के तहत देश भर में कार्यक्रम करेगा। Let's take the first story of the day. While addressing the joint sitting of Parliament of India, Srimati Draupadi Murmu said the year 2023 was a historic year for India when it grew the fastest among major economies despite global crisis. India grew about 7.5% for 2 consecutive quarters. She said developed India will stand on the 4 strong pillars of youth power, women power, farmers and the poor. The world has faced 2 wars and COVID-19 in the past few years. Despite the global crisis, my government kept inflation under control across the country and did not put the burden on the citizens, the president said. Speaking about ease of doing business, the president said, my government is continuously working on making it easy to do business in India and creating a suitable environment for it. Further, she stated that the government is working with full commitment to empower MSMEs and small entrepreneurs. On inflation, the president highlighted that earlier the country's rate of inflation was in double digits and now it is under control. The president noted Make in India and Atmanirbhar Bharat have become India's strengths. Further, she appreciated the defense production crossing 1 lakh crore rupees mark. What would you say, Vishalji, this, you can say, complete overview that the president gave in her address today in the parliament of how the economy has fared in the last 1 year and in fact over the last 10 years. What is the major highlight which has brought us to this stage where we are the 5th largest economy in the world, the fastest growing economy in the world? Well, the answer lies in the comment which the president made in her address to the parliament, and you mentioned that in your read as well. 4 pillars. If you look at those 4 pillars, there lies the answer. And if you juxtapose that with the policies of the government so far, we will find a detailed note on how it has happened. Youth power,
the demographic dividend which India has, the kind of policies which have been put in place vis-a-vis a self-reliance mechanism, the Startup India scheme, the entire startup ecosystem as well, the skilling ecosystem as well, because ultimately the youth power will have to be skilled to add value to the economy at a larger scale and to add value to their own lives as well, their own lifestyle also. Then comes the women power. Now, women power, there's some very interesting figures I was going through. When the president said women power, in Prime Minister's Jan Dhan Yojana, the women bank account holders have increased from 53% in 2015-16 to 78.6% in 2019-21. Then the participation of the female labor force has also, this rate has also gone up significantly up from 23%, around 23% in 2017-18 to 37% 5 years down the line, that is in 22-23. That is another clear indication as to how this, this आधी आबादी जिसको हम हिंदी में कहते हैं, उनका contribution कैसा है, how are they contributing to it, how are they becoming part of the mainstream, how are they becoming part of the inclusive growth story as well. Then comes the farmers. Now when we look at the farmers, agriculture sector, if you look at the growth rate of the agriculture sector, the kind of consistency which has been shown in the past 2-3 quarters is something which is very healthy, very remarkable as well. The schemes of the government vis-a-vis giving fillip to the farmers' income, MSP rates, approximately 17 to 18 lakh crore rupees have been spent on farmers MSP as well, and then the entire ecosystem of bringing in technology as well in the agriculture sector, that again shows what kind of fillip it gives. The fourth pillar is the poor. Now the entire focus of all these policies should be, and it has been, to eliminate poverty, one, to bring the poor out of that poverty mechanism, that vicious cycle, and that has helped on that has been done on the basis of various social sector schemes as well, be it the pension scheme which has been put in place for various unorganized sector employees and workers as well, then the focus on gig economy workers as well, the way they can earn more money, the focus on providing them houses under the Prime Minister's scheme, the providing them toilets as well. So this works as an ecosystem. All those four pillars which the president mentioned in her speech is a clear indication of how the policies are getting translated at a micro level and then at a macro level, leading to this unprecedented growth of more than 7% when a global economy, the developed economies, are stuck at somewhere around 3%. And you feel that the rapid digitization has helped in reducing the gap between intent and action, which is something which we used to see earlier, but now whatever is being done with great efficiency. Indeed, you look at the Jan Dhan Yojana is a good example. The JAM Trinity. The JAM Trinity is where we've shown the world that this is how digital technology can be used, and we showed the world during the COVID pandemic as well that this is how digital platforms and digital tech can be used. जी हाँ, और राष्ट्रपति ने कई क्षेत्रों की बात की और कहा कि जो लगातार किस तरह देश आगे बढ़ रहा है, उन्होंने खेलों की भी बात की कि खेल में कैसे हम लगातार ये बढ़े हैं, छात्राओं के बारे में कहा कि कैसे शौचालय बनने से अब छात्राओं का जो पढ़ाई बंद होने का मामला है वो खत्म हो गया है, तमाम तरह की बातें हुई। अब देखिए कल अंतरिम बजट भी है, अगर हम इस अभिभाषण को थोड़ा देखें तो क्या इशारे हैं, क्या अनुमान हैं? देखिए विभूति जी, सभी लोग इस वक्त ये वो समय होता है बजट से एक दिन पहले का जो समय है, 2 दिन पहले का जो समय है कि सब तरह के कयास लगाए जाते हैं, सब तरह के अनुमान लगाए जाते हैं और ख़ासतौर पे सरकार की तरफ से किस तरह की इंडिकेशंस आ रहे हैं। और उसमें एक सबसे बड़ा इंडिकेशन होता है कि राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है उसमें किस तरह की बातें की जा रही हैं। इकोनॉमिक सर्वे क्या कहता है, इस बार इकोनॉमिक सर्वे की बजाय एक इकोनॉमिक रिव्यू, आर्थिक रिव्यू लाया गया जिसमें आंकड़े दिए गए। एक जो बात सामने साफ निकल के आ रही है वो ये आ रही है कि कुछ सेक्टर्स जिन पर इस अंतरिम बजट में सरकार का फोकस रहने वाला है वो होगा एजुकेशन, वो होगा हेल्थ सेक्टर और स्किलिंग इंडिया की अगर हम बात करें तो वहां जैसे कि मैं पहले कह रहा था, क्योंकि हेल्थ पर इस वक्त लगभग 3% के आसपास जीडीपी का खर्च हम अपने बजट का हिस्सा दे रहे हैं।
उसको आगे बढ़ाना जरूरी है। कोविड पेंडेमिक ने हमको बहुत सारी सबक दिए हैं कि किस तरह से जो हेल्थ इकोसिस्टम है, जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको बिल्ड करने की जरूरत है। पिछले 3 साल में 2 साल में उसके ऊपर और तेज गति से काम भी हुआ है। रिसर्च किस तरह से की जाए, फार्मा सेक्टर किस तरह से डेवलप किया जाए, तो ये सब फोकस एरियाज होंगे। और एजुकेशन और स्किलिंग की जिस तरह मैं पहले बात कर रहा था कि यूथ पावर की प्रेसिडेंट ने बात की, तो वो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, उसके ऊपर कैश इन करने के लिए, उसका फायदा उठाने के लिए हमें जो लेबर फोर्स है उसको इस लायक बनाना होगा कि वो कंट्रीब्यूट कर पाए, नंबर 1 यानी कि एजुकेशन और स्किलिंग, और नंबर 2 कि वो कंट्रीब्यूट करने की स्थिति में रहे, यानी कि उनकी सेहत अच्छी रहे, तो हेल्थ सेक्टर। जी हाँ, और अक्सर ऐसा देखा जाता है। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे इस चर्चा में, लेकिन अभी समय है एक अल्प विराम का। जल्द वापस लौटते हैं। अपने सुरक्षित भविष्य के साथ साथ वित्तीय स्थिरता के लिए भी एनपीएस पर भरोसा करें। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉर्पोरेट कर्मचारी एनपीएस से जुड़ सकता है। किसी भी पीओपी जैसे बैंकों, एनबीएफसी के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी है। Welcome back to Market Mantra. If we talk about, Vijayji, about tourism as a sector, it suffered a setback due to COVID. Now, you think that due to government's concerted efforts, tourism as a whole and pilgrimage and heritage tourism particularly are growing phenomenally and giving a boost to the economy? Well, indeed, and the biggest contribution, latest contribution rather, the biggest it will become in some time, but the latest contribution to the tourism sector's growing health would be the event which happened on 22nd of January, the consecration of Ram temple in Ayodhya. Events like this, that is one, and developments like these, the way the entire infrastructure is built around various themes in the tourism sector. Char Dham theme is there, then there is Buddha circuit is also there, then down south as well there are routes which have been put in place. The government intent is very clear. The government will put in place the infrastructure. The government will put in place an enabling mechanism. Now it is for the industry to go ahead and cash in on it, put their best foot forward, and of course the citizens as well to get the benefit out of this. Roam around our own country, look at wonderful, beautiful destinations out there. So as far as tourism sector is concerned, indeed looks like there is a lot of positivity ahead. And in the economic review which you were referring to, they are saying that in 3 years we'll become a $5 trillion economy, and by 2030 it is projected we'll become a $7 trillion economy. What do you think would be the major areas which the government will have to focus on to achieve this objective? See, the areas are largely going to be the same which we have seen in the past 4-5 years, because one of the major area is infrastructure, the capital expenditure. We've seen how the capex has grown significantly over the years, and that is a trend which we are likely to see in the next few budgets as well, to achieve those targets of becoming a $5 trillion economy, $7 trillion economy, and then later on 10, 20 and 30 as well. That is one area. The public spending is going to increase on infrastructure. That is one. Two, that should and that is likely to attract more private sector investment as well, because that's another important engine of the economic growth, and specifically in India's case that is the second most important engine. Third, let's not forget that India is a good and a large and a very healthy consumer market as well. So that is one of the reasons why we are so immune to these large shocks which are there in the global economy. We've seen almost 2 wars and 3 or 4 waves of a pandemic in the past 4-5 years, and that seemingly has had lesser impact on the Indian economy than it has seen on the global economy. And in fact, if you look at the COVID post-COVID recovery period, our recovery has been phenomenal. Our recovery has been at a much faster rate
than it has been in much other developed economies and our neighbors as well. When we look at our neighboring countries, Maybe it's because of the targeted reforms of the government. one, targeted reforms of the government. Two, not losing sight of where lies the key in terms of turning around the economy, where lies the focus areas in terms of filling those gaps. Sectors like health, sectors like social sectors, providing food to the needy people, providing basic infrastructure to them, and also on the reforms part, not letting go of the entire macroeconomic aspect as well. Absolutely. So जी विशाल जी, देखिए जाहिर तौर पे आपने विकास और विरासत की बात भी की, और नई घोषणाएं संभव नहीं हो पाती हैं आमतौर पे, लेकिन जो मौजूदा जो परियोजनाएं जो कि चल रही हैं, तो देश के हर वर्ग का ख्याल भी रखना है और विकसित भारत की ओर भी बढ़ना है। तो इस समन्वय की ओर सरकार का ध्यान किस तरह रहेगा, और इस जो कल अंतरिम बजट जो होने वाला है, क्या इसकी रूपरेखा कुछ दिखेगी जुलाई वाले में? देखिए, बिल्कुल कंटिन्यूटी बिल्कुल हर बजट में हमें देखने को मिली है। अगर पिछले कुछ बजट डॉक्यूमेंट्स जो हैं जो कि फाइनेंस मिनिस्टर ने पेश किए हैं, अगर उन पर एक सरसरी निगाह डाल के देखें तो हमें दिखता है कि एक साल के बजट में जिन बातों पर फोकस किया गया, जिन बातों पर विचार किया गया, ऐसा नहीं है कि अगले साल के बजट में उनको भुला दिया गया और फिर कुछ नई बातें आई हैं। जिन बातों पर 2018 के बजट में बात हुई होगी, उन्हीं बातों पर 2019 के बजट में और आगे उसमें बढ़ाया गया, कुछ नई चीज़ें जोड़ी गई। और यहाँ हम अगर सेक्टर्स की तरफ बात देखें तो एक बार फिर से इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ ध्यान जाता है। पिछले 2-3 साल के बजट को उठा के देखिए किस तरह से रेलवेज की तरफ अगर देखें तो धीरे धीरे उसमें पुश दिया गया, और पिछले साल का जो बजट था उसमें अब तक की सबसे ज्यादा एलोकेशन रेलवेज को की गई, क्योंकि रेलवेज के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना था, नंबर 1, नंबर 2 सेफ्टी सिक्योरिटी के एस्पेक्ट को भी देखना था। और कैपिटल एक्सपेंडिचर की जब हम बात कर रहे हैं तो केवल रेलवेज की तरफ नहीं देखा जा रहा है, आप हाईवेज की तरफ देखिए, इनलैंड वाटरवेज की तरफ देखिए, पोर्ट एंड शिपिंग की तरफ देखिए, सिविल एविएशन की तरफ देखिए। ये मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर पुश है सरकार की तरफ से। डिफेंस की अगर बात करें तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर है हमारे देश के लिए, और खासतौर पे आत्मनिर्भर भारत की हम जब बात करते हैं तो डिफेंस सेक्टर का एक बहुत ही अहम रोल इस सरकार ने एक एनविजन किया है। और जिस तरह से डिफेंस एक्सपोर्ट्स में जो एक बढ़ोतरी देखने को मिली है वो इसलिए क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किया गया, डिफेंस कॉरिडोर्स बनाए गए, टेक्नोलॉजी के ऊपर ध्यान दिया गया, जो देसी कंपनियां हैं, जो भारतीय कंपनियां हैं डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में, उनको बढ़ावा दिया गया। तो वो सब चीजें सब निकलकर सामने आ रही है। ये एक वो पिक्चर है जो कि शुरू हो रही है और धीरे धीरे उसका एक लार्जर कैनवास जो है हमको दिखता जा रहा है। बस एक संक्षेप में एक सवाल करना चाहूंगा। देखिए, हमारी वित्त मंत्री जी के साथ एक अच्छी बात यह है कि लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व है उनको जी, तो अतिरिक्त दबाव ऐसा कुछ नहीं है जो पहले हम देखते थे कि चुनावी वर्ष में कुछ लोक लुभावन बातें सामने आए। फिर भी इसके तहत कुछ हम अगर राहतों की बात करें हम, तो आपको क्या लगता है? देखिए, राहत इंटरिम बजट में किस तरह की राहत देखी जा सकती है, अगर आम आदमी के नज़रिए से देखें, टैक्सेशन के लिहाज से अगर देखें तो उम्मीदें सबकी रहेंगी। चुनावी साल भी है, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि इस सरकार की तरफ से पॉपुलिस्ट एजेंडा बजट में बहुत कम देखने को मिला है। बात होती है एक वृद्ध विकास की, जी जी, एक लार्जर इंक्लूसिव ग्रोथ की बात होती है। तो कुछ ट्वीक्स की उम्मीद की जा सकती है, जैसे कि पिछले बजट में हमने देखा कि जो एक न्यू टैक्सेशन रिजीम था उसमें कुछ ट्वीक्स पिछले बजट में किए गए थे। हो सकता है इस बजट में कुछ ट्वीक्स देखने को मिले, लेकिन राहत खासतौर पे हमें जो सोशल सेक्टर स्कीम्स हैं उनकी तरफ अगर हम निगाह डालेंगे तो शायद वहां हमें ज्यादा राहत देखने को मिले कि किस तरह से जो सोशल सेक्टर स्कीम्स हैं उनमें सरकार कितना पैसा खर्च कर रही है, क्या नई बातें लेकर आ रही है, और जो स्कीम्स ऑलरेडी चल रही हैं उनको और इफेक्टिवली कैसे इंप्लीमेंट किया जा सके, वो जो लास्ट माइल तक पहुंचाने की बात है वहां तक कैसे पहुंचाया जा सके, उसके लिए क्या तैयारी है सरकार। तो इंतजार है कल के अंतरिम बजट का। इससे पहले शेयर बाजार का प्रमुख हाल जान लेते हैं। और वैश्विक शेयर बाजारों से नकारात्मक संकेतों के बीच प्रमुख घरेलू सूचकांक करीब 1% ऊपर बंद हुए। बीएसई सेंसेक्स 71,750 अंक के ऊपर, जबकि निफ्टी 21,700 के ऊपर बंद हुआ। सेंसेक्स 612 अंक या
0.86% बढ़कर 71,752 पर और निफ्टी 204 अंक यानी 0.95% बढ़कर 21,726 पर बंद हुआ। बीएसई के व्यापक बाजार में मिड कैप इंडेक्स में 1.57% और स्मॉल कैप इंडेक्स में 1.83% की वृद्धि हुई है। Before we proceed with the stock market news, we'll take a short commercial break. जीवन में स्थिरता के साथ साथ एनपीएस आपको आर्थिक आजादी भी देता है। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉर्पोरेट कर्मचारी एनपीएस से जुड़ सकता है। किसी भी पीओपी जैसे बैंकों, एनबीएफसी के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी है। Welcome back to Market Mantra. The key domestic indices rose nearly 1%, even though there were negative cues from the global share markets. The BSE Sensex closed above 71,750 mark and the NSE Nifty settled above 21,700 level. The Sensex gained 612 points or 0.86% to finish at 71,752. The Nifty added 204 points or 0.95% to settle at 21,726. In the broader market at the BSE, the mid-cap index gained 1.57%, while the small-cap index rose 1.83%. In the Sensex index, which is a pack of 30 companies, shares of 28 companies appreciated, while 2 companies declined. Sun Pharma surged 3.4% and Tata Motors climbed 2.9%. Bajaj Finserv and Maruti both advanced 2.3%. SBI rose 2.2%. On the other hand, Larsen & Toubro tumbled 4.22% and Titan fell 1.03%. In sectoral indices at the BSE, 18 sectors registered gains, while 2 sectors witnessed losses. Healthcare climbed 2.67%, realty gained 2.29%, and auto sector rose 1.77%. Services sector advanced 1.6%, and commodities added 1.5%. On the other hand, capital goods lost 1.23% and industrials fell 0.16%. The overall market breadth was positive as the shares of 2,411 companies appreciated, while those of 1,411 declined. Shares of 92 companies remain unchanged. We have seen a great, rise in stock markets today. In fact, BSE small cap and mid cap indices, they hit their all-time highs. What do you attribute this exuberance to, and how do you see the road forward for the markets? Well, one thing which is very obvious here is that after Tuesday's weakness, there was a correction in the market on Tuesday. So it was that was one factor, that it was expected that there will be some sort of bull run today. But 2 more added factors is the expectation building up from the union budget. That is one, and then the points which you were mentioning, and if you look at these indices, they give also a clear indication. Companies, the pharma indices, the health sector companies, the banking as well is on the rise. Even auto is on the rise. Largely, it's a very, very positive sentiment which we are seeing. So that again is the rate sensitive sectors. Exactly, yeah. So that again is an indicator that this is what the market is also expecting, that there is going to be one in terms of policy, there is going to be more push on these sectors. 2, in terms of public spending, the capital expenditure as well. That is also a clear indicator. We've seen Nifty Realty is also gone up. So there is this positive sentiment there as well. Third factor, which is again, the expectations, and which we might see tomorrow. We'll have to wait and see as to how the market reacts to budget. That is one. And 2, the US, Fed rate cut announcements as well. Although the first rate cut is expected somewhere around in June 2024 only, but the kind of roadmap which the US Federal Reserve will come up with in terms of how do they want to go ahead, that will have an impact on the global markets. And then, of course, that's a process as well, that the Indian markets are likely to take some cue there. Again, we'll have to wait and watch till tomorrow, second half around 2-3 p.m. as to how these 2 things are working in tandem with each other or are working against each other. But briefly, you feel that it is the macro strong fundamentals which are, supporting the market, and there is no possibility of a bubble?
undoubtedly, macro fundamentals are very strong. That's a clear indication, and that is how it has worked as well. And if you look at the market, the way market has responded to key events, key policy events, both domestic and global as well. And when we say global, mostly the US Federal Reserve's announcements or other World Bank announcements as well, reacting to how the global markets are behaving as well. It has been a very, very balanced approach. If we have seen the markets going down, then there are logics and reasons behind it as well. It is not a bubble. रुपया का हाल जान लेते हैं। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज डॉलर के मुकाबले 83 रुपये 4 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक दिन के कारोबार में आज गिरावट के साथ 103.57 पर था। और DPIIT यानी उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने एक जिला एक उत्पाद संपर्क पहल के तहत देशव्यापी कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य देश भर के विभिन्न जिलों से उभरती सफलता की कहानियों को सामने लाना और जागरूकता पैदा करना है। अब तक 15 राज्यों में कार्यशालाएं आयोजित हुई हैं। ODOP संपर्क का वास्तविक प्रभाव कार्यशालाओं में विक्रेताओं के साथ लाइव बातचीत के माध्यम से साफ हो जाता है और फिर DPIIT द्वारा सक्रिय पहल से किसी भी तरह की कमियां दूर हो जाती हैं। इन पहलों में बोर्डिंग पर ई-कॉमर्स के लिए सहायता प्रदान करना, ODOP नीतियों को तैयार करने के लिए राज्यों के साथ सहयोग करना, पैकेजिंग रणनीतियों को बढ़ाना, साथ ही घरेलू और वैश्विक प्रचार को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय स्तर पर विक्रेताओं के साथ कनेक्शन की सुविधा प्रदान करना शामिल है। और अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की ओर। जी और एशिया और यूरोप के बाजार का हाल जानते हैं। एशियाई बाजार आज मिले जुले रुख के साथ बंद हुए। सिंगापुर का स्टेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.09% और जापान का निक्केई 0.61% बढ़ा। दूसरी ओर हांगकांग का हैंगसेंग 1.41%, चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 1.31% और दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.07% गिर गया। दिन के कारोबार में अंतिम समाचार मिलने तक यूरोपीय बाजार भी मिला जुला कारोबार कर रहे थे। जर्मनी के डेक्स में 0.2% की गिरावट आई। फ्रांस का कैट 0.07% बढ़ा, जबकि लंदन का फुटसी सपाट कारोबार कर रहा था। Moving to the US, the three major US indices had a drifting trade yesterday. The Nasdaq Composite Index lost 0.71% and the S&P 500 slipped 0.06%. The Dow Jones Industrial Average gained 0.35%. Moving on to commodities, oil prices fell by around 1% today, pressured by slow economic activity in the leading crude importer, China. In intraday trade, Brent crude was trading 1% lower at $82.04 per barrel, while U.S. West Texas Intermediate crude was also trading down 1.15% at $76.91 per barrel when reports last came in. Briefly, what would you say? Is there a likelihood that crude will remain in the range of 80 to 82? Well, that's what is expected, because if you look at the crude prices over a shorter period and over a longer period as well, they have reacted in the same manner as well. The idea would be to again watch out for the global cues here. जल्दी में सोना और चांदी का हाल जानते हैं। MCX में आज सोना फरवरी अनुबंध के लिए बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। अंतिम समाचार मिलने तक सोना 148 रुपये बढ़त के साथ 62,780 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। मार्च अनुबंध वाली चांदी 110 रुपये की गिरावट के साथ 72,235 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। So you feel the current uncertainty globally will keep gold prices at a higher level? No, indeed, because global economic cues are not that positive, global economic cues. Yeah. So a lot of thanks to you, Vishalji, for coming to the studio and shedding light on so many diverse topics related to economy. Thank you. Thank you, Vibhuti ji, and thank you, Sonu ji, you as well.
And before we close, a reminder of the headlines. India remains fastest economy despite global crisis, says President in her Parliament address. Key domestic indices rise nearly 1%. Sensex closes at 71,752. Nifty settles at 21,726. And Department for Promotion of Industry and Internal Trade conducts nationwide events under One District, One Product Sampark initiative. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. नमस्कार। एक आकर्षक निवेश के साथ साथ एनपीएस समानता का भी साधन है। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉर्पोरेट कर्मचारी एनपीएस से जुड़ सकता है। किसी भी पीओपी जैसे बैंकों, एनबीएफसी के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस। अपना बेहतर कल सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। Market Mantra.